basically relative to some reference, always. You know, right? Relative motion. So there is motion relative to some reference. So here also relative means relative to some reference. So what is that reference? Reference means this air can contain a maximum amount of moisture at a particular temperature, the current temperature. So it can contain that much of moisture. So relative to that, what is the exact condition now? So this is not relative. If it is 50%, that means 100% is there. Now it is at 50%. If it is 90%, means it is 100%. It is close to 100%. That is almost close to the maximum capacity. Okay, relative humidity. Relative humidity or RH, it is defined as the ratio of the actual moisture in the atmosphere, in the air. Air means atmospheric air. In the atmosphere or air. This is atmospheric air, basically. Divided by the maximum possible moisture that the atmosphere can hold at this temperature. Atmospheric air, जैसे at the given temperature. Okay, at the given or current temperature. Okay, one thing I must tell you that this temperature is having particular name. We do not call it loosely a temperature. In air conditioning, this temperature is having particular name. Okay, say for example, this is the thermometer. This is the thermometer, and there is a bulb. There is a bulb, material bulb. This bulb, when we simply measure this temperature with this thermometer, we call it a dry bulb temperature because the bulb is dry. Called dry bulb temperature. Okay. Now you see what is the temperature here? Temperature is around say 33. Yes. 33? Yes, sir. Although we cannot conclude from this because it is having a minimum discount is 2 degrees, so we cannot call it 33. It is about 33. Okay. So this is temperature for dry bulb temperature. There is another temperature we call wet bulb temperature. Okay. Now we will show you. You see, both are having the same temperature. This is called dry bulb, this is called wet bulb because this will be wetted by water. So if I put water here, then this cotton will be wetted. Okay. And the temperature, whatever it will be shown, we will call it wet bulb temperature. Wet. This is called dry. Okay. Now, can you read the temperatures for both? You see, there are temperature scales. Degree centigrade, degree Fahrenheit for both. Degree centigrade, degree Fahrenheit. Now, can you read the temperatures?
34, 30. This one वेट बल्ब ऑलमोस्ट इक्वल है। अब देखेंगे इसको कम करके, ठीक है, इसको कम करके we have water, some water. Yes. इसमें देखेंगे अंदर what do you guess what will happen if I wet the bottle? What is going to happen? स्केल बढ़ेगा सर। टेम्परेचर कितना होगा इसका, मतलब कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो ड्राई वाला है उससे ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा चाहिए। वीडियो में आ रहा है इसका, ये आ रहा है? नो सर। Actually, this can be done by removing this इतना ज़्यादा भी नहीं चलते। Just put this within this and then I will place the bottle there. Now due to the capillary effect, water will rise and it will wet the bulb. Okay, it will wet the bulb. Now not only this is enough, we have to place it at some wind so that evaporation takes place. Evaporation takes place from where? From this. So now it is wetted, so evaporation will take place. Now due to evaporation, what will happen? Cooling. Evaporating cooling, exactly. So water will evaporate from the surface of the bulb. So it will absorb the thermal energy from the bulb and it will evaporate. Therefore, it will cool it. Okay. Now, how long it will cool or what extent it will means to what extent it will cool? As long as the moisture near the as long as the air near the vicinity of this will become saturated. That means what? Because that how much is the maximum possible? After that, it cannot take moisture. So the air is taking moisture. Yes, so the air near this is taking the moisture only. It is not coming from say the push station. Near this it is only taking the moisture. So it can take only if it can. It will take the moisture only if it can. That means if its relative humidity is less than 100%, then only it will take. Yes, sir. So when it is evaporating, what will happen? It will take moisture from that. It will take the thermal energy from the bulb and it will cool the bulb. Okay, and that will continue as long as the moisture near this is not saturated. If it is saturated, then it will stop. So when that will stop, we will call that as wet bulb temperature. Okay, now let us hang it and open the window. After some time, we will follow what happens.
this air is coming, or we can hang it here. Will be one. So perimeter temperature 34. Now when we will look at the both. That means the dry bulb temperature and wet bulb temperature. Maybe the wet bulb temperature will be definitely less after it is cooled, but at the same time the dry bulb temperature may also change. It may increase or decrease because of the atmospheric condition, not due to the wetting or cooling. Okay, so it will be basically changed. Now after say for example 2-3 minutes we will check what happens. Okay, so this is called okay, one thing is relative humidity and the temperature that we will take here, it is called the basically the dry bulb temperature. So is it clear that there are two temperatures we have already noticed. One is called dry bulb temperature and another is wet bulb temperature. The bulb that is dry is called dry bulb temperature. The temperature shown by the bulb, which is the dry, is called dry bulb temperature, and which is wetted is called wet bulb temperature. Okay, so now therefore actual moisture in the atmosphere divided by the maximum possible. Okay, now how to write this? What is the pressure of this if it is say for example, what is the temperature of this? Yes, sir. Temperature T. Temperature of this actual moisture. So when this, what is the relative humidity? Meaning of relative humidity is that this air currently it is containing some moisture, Yes, sir. but it is not that much which it can contain. It is less than that. So if I allow it to contain, or if I allow it to hold more and more air, more and more moisture, then it will take it. But at a certain limit, after a certain limit, it will not take it, or it will not allow the moisture to be evaporated within the atmosphere. So it will be separated. So it is called saturation condition. That time we will call that the air is saturated by the moisture. What is that therefore called? That means air is saturated. What is the relative humidity? 100%. 100%. That means it could contain. Now I have allowed it. I have added moisture. So why? How can I add moisture? I will mix in and add to the atmosphere. So this is the humidification. That means I will just add moisture. So I will make vapor and I will add. Clear? So that way I will increase the moisture content. After a certain time, then I will not change the temperature. I will simply add moisture. Okay. Now what will happen? It will keep on absorbing or keep on adding the moisture, accepting the moisture. Okay. But it has a limit. When the limit will be reached, it will not allow it. So even if I add it will be separated. So that condition is called saturation. I will call that this air is fully saturated by moisture. That is called relative humidity 100%. Okay. Okay, clear? Now that time, can you tell what will be? Okay. Let me check what is the wet bulb temperature. Not colder, not hot. What is the wet bulb temperature? ड्राई होना तो पड़ेगा ऐसे। ड्राई bulb में फिर नोट करो, अभी नोट करो। ड्राई bulb T dB बोलता है इसको।
इसका नेम है ऐसा होता है TED। सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसको बोलते हैं TED। ओके, एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इसको बोलते हैं TWD। कितना हो गया लिखो। ड्राई बल्ब कितना हो गया 36, वेट बल्ब हो गया 31, कम हो गया। ऐसे मतलब फिजिक्स मतलब ये होगा ना, समझते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले दोनों ही 34 करते हैं। पहले दोनों ही 34 था, इसको एक्चुअली वहाँ पर शायद टेम्परेचर ज़्यादा हो गया वहाँ पर। ओके, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर अभी एक 31 और 36 को, ठीक है। इसका और एक वेरिएशन है, इसको भी दिखा देता हूँ। For this you have to hang at some place. Yes, this one. But for this one, this is another type of set. This is called sling psychometer. Sling psychometer. Here also there is one driver and one other wet bulb. ठीक है, तो इसमें थोड़ा वाटर। अच्छा, इसमें पहले देख लो इसको टेम्परेचर कितना है। अच्छा, ये थोड़ा कम है, तो मैंने तो सुबह में इसको टेस्ट किया था, इसीलिए अभी कम हुआ है, ठीक है। सुबह में टेस्ट किया था इसको बिफोर द क्लास। सो यू सी दैट हाउ मच इट इज 36 जैसा है। ये कितना है, थोड़ा 32 मीटर 34 दिख रहा है। ये कितना है, ये 34 दिख रहा है। 34 है। अच्छा, 5 के नीचे है। नहीं, 5 से ऊपर हो गया। हाँ, ओ सॉरी, 5 के नीचे। हाँ, 5 से 34 है। 34 या 30, हाँ 34। ये कितना है, ये 31 जैसा कुछ है। 31 या 31 जैसा 31 या 30.5 30.5 है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें पानी देते हैं। ओके, so this is the dry bulb thermometer and this is the wet bulb thermometer. We will pour some water here, this pour. हाँ, ठीक है, ये थोड़ा मतलब बाहर हो जाएगा क्योंकि इधर बॉटल का एक ओपनिंग है। तो now we will seal it. Now we will keep on rotating this. There it was actually open. Now we will rotate it. Now what is happening basically? Due to this, a motion is created. There air was moving. Here I am moving this. So relative motion of air and this thermometer is there. So relative motion, right? So it will evaporate the water, right, absorbing heat from the bulb of the thermometer, and therefore the thermometer temperature, the bulb will be cooled and temperature will show less, and it will be showing, it will be continue to decrease as long as the moisture is not saturated. If the moisture is saturated, then it will stop decreasing. That is the wet bulb temperature. Okay, so if we just rotate for a few seconds, we will see it. What is happening? It's a 29 हो गया उसका, ये तो 34 34 तो उसका भी फिर लिख लो। So two temperatures we have noted already, right? One is for the dry bulb temperature, another is the wet bulb temperature.
What is the temperature of this? So this is the moisture. Say for example, in terms of mass, you can consider. This is the mass. This is another mass. So this is one mass which is currently there, and which is the mass that is can be absorbed by the air maximum. So what is that mass in terms of mass in terms mass is proportional to mass is proportional to pressure and molecular weight. Molecular weight of what? Vapor. Vapor. This is the volume, and this is universal gas also, and this is temperature. Which temperature? Actual temperature. Dry bulb temperature. Okay, in scientific or in air conditioning, we will call it dry bulb temperature. Simply dry bulb temperature. Okay. Now, therefore, if I try to write this ratio from here, what I will write? PC mv by mg. mg is saturated condition. At the saturation temperature, at the saturated condition, this is the maximum that it can contain. Okay. So, therefore, what is that? PV M V T divided by RU. Oh sorry, V RU T. क्लियर? नीचे में क्या आएगा? प्रेशर चेंज हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट तो वाटर का ही है, एक ही रहेगा. वॉल्यूम भी एक ही रहेगा. Yes sir. Temperature. RU भी एक ही रहेगा. टेम्परेचर भी एक ही रहेगा. सेम टेम्परेचर पे खुला है. Yes sir. The condition में ऐसा है कि the moisture that is contained actually divided by the moisture that it can contain at the same temperature. So this temperature is also same. So therefore it will be, we will call it Pg. That is saturated the pressure when the moisture is the air is saturated by the moisture. So Pg mv v divided by RU. क्लियर? तो पूरा कैंसिल हो जाएगा. Yes sir. क्या रह जाएगा? PV by PG. ठीक है? पूरा क्लियर? Yes sir. So we call this RAH by the symbol phi. So this is omega, this is phi. So phi is equal to PV by PG. Okay. So PV क्या है और PG क्या है? PV मतलब ये actual condition है और this is PG. At the same for both the temperatures are same. Only this is having more moisture, so partial pressure of this is more, this is less. Clear? So this is saturated, so the partial pressure is more, partial pressure of vapor is more, and this is less. Okay. Now from this you can definitely calculate what is PV. You see, there is a common term, omega in terms of PV, phi in terms of PV. So you can eliminate PV from both and you can relate between phi and PV. Isn't it? There are two equations and both the equations are having a parameter. So it's a kind of parametric equation. So where PV is common. So you can get a relation between this. So what is that? PV is equal to phi into PG. Just replace it here. Just replace it. PV just replace it here and you will get a equation. Okay. So let me do it here. So what is the relation therefore? Omega
is equal to 0.622 PV, sorry, 5 pg PG divided by p P minus minus 5 pg. 5 PG. So this is when you know relative humidity, when you know relative humidity and you know PG. How can you know PG? Can you tell me? This is important to understand. Just by knowing temperature and relative humidity, you can calculate specific humidity. Because you see that what is PG? PG is nothing but the saturation temperature corresponding to the dwell temperature. Yes, sir. So PG is equal to nothing but P sat at T dB. If I know dwell temperature from steam table, I can calculate what is the saturation pressure corresponding to the dwell temperature. So that is equal to PG. So I know therefore PG. If I know T dB, that means from the thermometer I know T dB, and therefore I know immediately from the steam table what is PG. Yes, sir. Right? Okay. So if I know PG, PV I cannot measure definitely. So I have to know relative humidity. So if I know relative humidity and if I know PG, then I can calculate specific humidity. Okay? Clear? Another thing is that you can, in other way, cross multiply. After cross multiplication and rearranging, you can eliminate phi in terms of omega. Can you do that? Are you getting my point? Yes, sir. Here just cross multiply and collect all the terms of phi, separate it and you calculate phi in terms of omega. Okay, you can do that. Should I do what you can do? You just do it and tell me what happens. So 5 PG at omega and P omega. So the 5 terms will be basically 5 PG common will be 0.62 plus omega. 0.62 plus omega. Well, so 5 is equal to omega p divided by omega p divided by Pg multiplied by omega plus 0.62. ऐसा कुछ आ रहा है? You can calculate what is the relative humidity. Right? Yeah. There is another concept called dew point temperature. Now the third temperature is coming. Dew point temperature. What is that? Say for example, the actual air is say here. Actual air is say here. Okay. Actual air condition is say here. Okay, cannot be so high, maybe here.
temperature is say 40 like that, and the pressure here is like that. Okay, now if I cool this, now for relative humidity the concept was the air was made saturated by adding moisture. Yes, sir. Now when I add moisture, what happens? The relative humidity increases. मतलब सैचुरेशन के बाद नहीं है। सैचुरेशन के बाद नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन से पहले Yes, sir. relative humidity increases. Now what happens to specific humidity? That also increases. Yes, sir. Yes, sir. Because specific humidity का मतलब क्या है? Mass of moisture divided by mass of dry air. So when I am adding moisture and the air is accepting it or absorbing it, that means relative humidity increase कर रहा है, और specific humidity that is also increasing. Clear? Sometimes it may happen that relative humidity, you see, now what we are doing is at this condition. So for that, if I add moisture at some time, the air will become saturated. But in that case, we are keeping the temperature constant. We are simply adding the moisture at the same temperature, and we are watching where it becomes saturated. So at that time, the vapor pressure is Pg, and we can calculate all this. Now there is another condition when we are basically cooling some air. Now when we are cooling it, what will happen? At some temperature, the moisture in the air will start condensing into water. So that temperature is called the dew point. Okay, that means that time also, when we were adding moisture, after it reaches the saturation, there I cannot add any further moisture, so it will be separate. Even if I add it, it will be separate. But in case of cooling, what is happening? It will start condensing. Now at that time also, when it will start condensing, because it cannot hold any more moisture. टेम्परेचर इलेस एट नॉट टेम्परेचर को छोड़ो, अभी टेम्परेचर तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मॉइस्चर से वो सैचुरेटेड हो गया। जो मॉइस्चर है, प्रेजेंटली जो मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बोल रहे थे, उस टाइम क्या बोलते थे? उसको मॉइस्चर ऐड करते करते एक सैचुरेशन में रीच कर गया। इसको बोलता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब रीच किया 100%, मॉइस्चर ऐड किया, मॉइस्चर ऐड करते करते एक टाइम में वो 100% रीच कर गया। उसके बाद कोई मॉइस्चर ऐड करेंगे तो वो सेपरेटेड हो जाएगा। लेकिन ड्यू पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? एयर को कूल कर रहे हैं। कूल करते करते एक टाइम में आएगा जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन कब स्टार्ट होगा? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तभी जब जो एयर अभी है प्रेजेंट में जो है वो प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उससे सैचुरेटेड हो गया, वो उसको अभी होल्ड कर नहीं सकता, उसको अभी छोड़ दे रहा है। टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए जो भी मॉइस्चर था उसी से ही वो अभी सैचुरेटेड हो गया। इसको समझना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जब बोल रहे थे उसको ऐड करते करते उसको सैचुरेट किया, और इस टाइम में क्या किया? उसको कूल किया, सो दैट जो भी मॉइस्चर था उसी से ही उसको सैचुरेटेड बना दिया। समझ में आया? दोनों अलग अलग चीज समझते हैं, लेकिन दोनों का एक कॉमन चीज क्या है? सैचुरेशन रीच करते हैं दोनों में। एक है इसको मॉइस्चर ऐड करते करते उसको सैचुरेटेड करा दिया, उसको सैचुरेटेड रीच कर दिया। और ड्यू पॉइंट में क्या बोला? उसको कूल कर रहा है, कूल करते करते उसको सैचुरेटेड कर दिया। ठीक है, तो जब सैचुरेटेड हो गया वो नाउ इट कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर एनी फर्दर, so it is now separating it. Okay, so dew formation start हो गया। ओके, यस सर। हाँ ठीक, समझ में आया? यस सर। देखो तो कैसा होगा जब ड्यू फॉर्मेशन, बिफोर ड्यू फॉर्मेशन, सो यू
the phenomenon. Here, this is the exact condition of air. Okay. Now, when the dew will form, when the process will cool, that means it will cool the air. Now, what is the condition? When the process at which it is cooling, basically during this process, there is no separation of moisture. स्टार्टिंग से यहाँ तक जाएगा तभी तो उसको मॉइस्चर सेपरेट होगा, यहाँ पर आके तभी तो मॉइस्चर सेपरेट होगा, इससे पहले तो नहीं होगा। तो इससे पहले अगर मॉइस्चर सेपरेट नहीं हुआ है तो इसका कंडीशन क्या होगा? जो मॉइस्चर था वो रहेगा, जो मॉइस्चर था इधर वो रह गया है, तो वो मॉइस्चर का जो वेपर प्रेशर वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? अगर मॉइस्चर जितना था, मॉइस्चर पहले से ही जो जितना था सेपरेशन होने से पहले वही रह गया है, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एक ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बिफोर सेपरेशन, बिफोर कंडेंसेशन, जो भी मॉइस्चर था तो सेपरेट नहीं हुआ है, तो जो प्रेशर वो दे रहा था वेपर प्रेशर वही देगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेपर प्रेशर प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द वेपर प्रेशर PV will be constant, and dry air pressure is always, means dry air amount is always same, so these two will be same. Okay, so this is a constant, so this is a constant, that is V is equal to constant process. देखो, this process is V is equal to constant. Okay, अच्छा इसके बाद क्या होगा पता है? यहाँ पर जाएगा मॉइस्चर सेपरेट हो जाएगा, लेकिन एयर का कंडीशन क्या होगा? यहाँ पर आगे तो मॉइस्चर सेपरेशन होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद आफ्टर दैट द मॉइस्चर इज नाउ इट स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम एयर। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस पाथ? किधर जाएगा? इधर तो नहीं चले जाएगा ना, अंदर में कैसे चले जाएगा? एयर का कंडीशन हम लोग पता कर रहे हैं इससे, वाटर जो सेपरेटेड हो गया उसको नहीं, एयर का जो कंडीशन है उसको पता कर रहे हैं, उसको समझने की ट्राई करें। तो उसका कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड है, अभी तो सैचुरेटेड है, फर्दर कूलिंग करके अभी तो सैचुरेटेड ही रहेगा, तो सैचुरेटेड लाइन को फॉलो करें, तो मतलब इधर आने के बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि एयर जो है सैचुरेटेड है। फिर अगर हॉट मतलब हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी वो सैचुरेशन से निकलेगा, तभी वो सुपरहीटेड वेपर में मिल जाएगा। मतलब रात में क्या होता है? रात में तो लैंड जो है सरफेस इट बिकम्स कोल्ड फास्टर, इट रिलीजेस हीट क्विकली एंड इट बिकम्स colder at night, and at the vicinity the temperature is below this temperature, so it will cool and it will start condensing the grass, the land, etc. Once the car surface is there, if you have a car outside, those surfaces will start condensation. So condensation start हो जाएगा यहाँ से, तो condensation start हो जाने के बाद यहाँ पर रह जाएगा क्या? मतलब आर्ट में ऐसा बोल रहा है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, अभी बंद कर दो सब, टेम्परेचर घटना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, टेम्परेचर तो घटते जाएगा। टेम्परेचर किधर है? टेम्परेचर घटेगा कैसे? देखो टेम्परेचर तो इधर है, टेम्परेचर एक्सिस इधर है, तो टेम्परेचर घटेगा इधर, तो इधर टेम्परेचर घटने का एक रास्ता था कांस्टेंट प्रेशर। ना अब तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहेगा, मॉइस्चर सेपरेटेड, जो मॉइस्चर सेपरेटेड ये घट गया, मॉइस्चर सेपरेटेड हो जाता है मतलब क्या? दिस इज डिक्रीजिंग, now as this decreases this will also decrease, so this will follow a lower pressure, so it will follow this way, पूरा जितना टेम्परेचर करता जाएगा ये लाइन को फॉलो करते जाएगा, only at the surface, only in the vicinity of the surface, not equator, clear? So ऐसे जाएगा, पहले ऐसा आ रहा था फिर इधर जाएगा, क्लियर है? So ड्यू पॉइंट किसको बोलता है? देखो इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इसको बोलता है TDP, क्लियर? क्लियर हो गया? ड्यू पॉइंट तीन टेम्परेचर पता चला, ठीक है? तीन टेम्परेचर पता चला,
एक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक है वेट बल्ब टेम्परेचर, एक है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर है उसको बोलता है एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, उसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन वो एक प्रोसेस है कि सैचुरेशन करना है, सभी में एक सैचुरेशन जैसा प्रोसेस है कि मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, थियोरेटिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग, प्रैक्टिकली इट्स नॉट इनफाइनाइट डेफिनेटली। सो इट्स अ लॉन्ग चैनल and at the inlet condition the air is not saturated, but at the exit it will become saturated by absorbing air from the water at the channel. So in the channel there is some water. Okay, in the channel there is a sound. So from that water will evaporate and mix with air, and whatever water is separated or mixed, now you will make a makeup by supplying water. So there is called makeup water. Okay, so we will level the water for the makeup, and at the end the water will become saturated, the air will become saturated with the moisture. Okay, so since this process is happening adiabatically because the channel is fully insulated, so that temperature at which it will become saturated, that is called adiabatic saturation temperature. So for the completeness of these four temperatures I just mentioned it. One is dry bulb temperature, another is wet bulb temperature, dew point temperature, and adiabatic saturation temperature. There is another adiabatic temperature in combustion. Could you remember? Adiabatic flame temperature. So that was adiabatic flame temperature. Now this is adiabatic saturation temperature. Okay. तो आज इतना ही है। मैं और एक चीज दिखाऊंगा। एक्चुअली सेंसर है, इसका टेम्परेचर ऐसे मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वाटर बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर सब एक ही में आ जाएगा। ठीक है, अभी का टेम्परेचर कितना दिखा है? जो टेम्परेचर दिखा रहा है उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अभी 70 अभी का टेम्परेचर, अभी का इसको लाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, इफ यू नो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, if you know dry bulb temperature and relative humidity, you can calculate specific humidity and many other quantities you can calculate. Okay, now there is another option of knowing the wet bulb temperature also. So I will now note it. 32.6. यह है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मीटर। अच्छा, ये इसका था स्प्रिंग साइकोमीटर से, उसको लिख लो। और पहले का जो था वो मतलब सिंपल ड्राई बल्ब टेम्परेचर से है। स्लिंग SLING, साइक्रोमीटर। यहाँ पर एक R है, साइक्रोमेट्री। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 76%। तो इसमें और एक बात है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी तुमको पता चलेगा। जितना देर तक ऑन रहेगा इसमें तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, वो भी दिखाएगा। मतलब एक पूरा दिन के लिए मैं ऑन रखता हूँ तो इसको दिखाएगा। फिर भी और क्या होता है, मतलब जितना टाइम ऑन रखता हूँ उसको उसी तरीका के लिए दिखाएगा। ठीक है, अच्छा नाउ मैं इसका वेट बल्ब टेम्परेचर दिखाऊँ। ऐसे करने से वेट बल्ब आ गया। तब इसको वेट बल्ब टेम्परेचर लिखो। 28.8। 28.8 व्यू में आ रहा है? यस सर। 28।
28.29 ये सब दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी देख सकते हैं इधर से। ये सेंटीमीटर डीपी है, डीपी हो गया, डीपी में जाएगा। ड्यू पॉइंट कितना दिखा रहा है? 27.6, 27.6, 27.5, 27.6 ऐसे व्यू में आ रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो ये चार चीज देख सकते हैं इधर से। अच्छा, एक बात फाइनल वर्ड्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा ये 3 टेम्परेचर उतना ही क्लोज होता जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब क्लोज है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब और वैसे नहीं ले नहीं सकता तो चेंज करेगा। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर से वेट बल्ब टेम्परेचर चेंज कब हो रहा था? वैसे नहीं कम था, वैसे कम था, उसको ऐड कर रहा था, तो ऐड करने का प्रोविजन था, इसीलिए चेंज हो रहा था। अगर वो सैचुरेटेड हो गया तो वो ऐड करने का प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो फर्दर ऑप्शन, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज। क्लियर? ड्यू पॉइंट के लिए भी ऐसा है, अगर पहले से सैचुरेटेड ऑलरेडी हो गया तो टेम्परेचर कम करने का फायदा क्या है? टेम्परेचर कम करते ही वो सैचुरेशन शुरू हो जाएगा, तो वही टेम्परेचर ड्यू पॉइंट है। क्लियर? तो मतलब ये भी एक मतलब फंडामेंटल भी है और क्वेश्चन भी है कि अगर 3 टेम्परेचर एक है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो 3 टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में ऐसा प्रोसेस को कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, समझ में आ गया सर। बोल सकते, हाँ समझ में आ गया सर। समझ में आ गया।